Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 सीबीसीएस ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोज गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोज रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू पढे मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज टॉपिक रे आमे फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब बा शॉर्ट फॉर्म रे कहले पीएमटी विषय रे पढिबा देखो एटा होची गोटे डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी माने तमरो फोटॉन्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी माने इलेक्ट्रिकल सिग्नल ओके सो यार स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन आमे देखिबा ए फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब बा पीएमटी रो एज यू कैन सी इन दिस फिगर सो यार वेरियस पार्ट्स को एबे फिगर रे एटा बुझाउची सो फर्स्ट पार्ट ता हला फोटो कैथोड this one okay eta hochi usually gote filament which is connected to the negative terminal of a high tension battery okay acha eta actually tiyari hi tha either zinc re kimba any alkali material which is used in the photocathode due to its low work function okay so low work function rohibo yar ଆଉ ତାକୁ ଆମେ photocathode ହିସାବରେ यूज करिबा सो जेते बेले गोटे फोटोन सफिशिएंट एनर्जी रो आउ एई एनर्जी सफिशिएंट एनर्जी माने इट विल बी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन ऑब्वियसली वर्क फंक्शन रु बेसी एनर्जी रो गोटे पार्टिकल रे जेते बेले हिट करिवो ताले एबे एई फोटो कैथोड रु ऑब्वियसली कोन हबो इट विल एमिट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जोटा हमें पढिछु सो एई अल्काली मेटल सच एज योर cesium जदि हमें नबा which is very sensitive to the photons throughout the visible region of electromagnetic spectrum okay so first part hela photo cathode तापरे हला डायनोड्स माने ए जो D1 D2 D3 D4 D5 ए हिसाब रे जो देखु जो एको सब डायनोड्स कहा जाय एक्चुअली दीज आर स्मॉल इलेक्ट्रोड्स okay towards which the electrons देखो एठी फोटो कैथोड रो एठी D1 आडकू गला D1 रो पुनी D2 आडकू गला D2 रो D3 D3 रो D4 then to D5 and so on okay so the small electrodes are these diodes towards which the electrons are directed electrostatically okay so the electrons which are produced at the photocathode जो स्टार्टिंग रे हमें देखिला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द्वारा इलेक्ट्रॉन माने जो प्रोडक्शन हैला they are accelerated towards the first diode which is B1 okay obviously electrons जदि accelerate होउची बा attract होउची ए D1 आडको माने D1 टा कोन पॉजिटिव पोटेंशियल रे रहिची okay so it is held positive with respect to the cathode that is your photocathode okay so the electrons ebe कोन हबो from D1 they are then again accelerated towards the second diode that is D2 which is kept obviously at a higher positive potential than that of your D1 okay D2 रो potential टा बेसी रहइबो positively as compared to D1 okay so generally 10 रु 12 टा डायनोड्स हमें usually arrange करिकी रखिथिबा in such a way that the successive diodes are applied with potential in increasing order माने D1 ru D2 D3 D4 D5 एमती जो आकु हमें गला पोटेंशियल टा इंक्रीज करी करी जाउची पॉजिटिवली ओके सो या द्वारा एबे कोन हबो जो इलेक्ट्रॉन्स गुडा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर एमिटेड ओरिजिनली फ्रॉम द photocathode they are multiplied many times okay as they are accelerated from successive diodes okay अच्छा डायनोड पर एबे थर्ड पार्ट होची तमरो एनोड बा याकू कलेक्टर मध्ये कुहा जाय इट इज द लास्ट डायनोड ओके एनोड इज एक्चुअली अ डायनोड एटा होची सबा शेषो डायनोड तो निहाती भाबरे सबु जेते इलेक्ट्रॉन एठी कलेक्ट हेबे सो ऑब्वियसली याकू हमें सबुठु बेसी माने हाईएस्ट पॉजिटिव पोटेंशियल रे मेंटेन करिकी रखिबा
Okay, so that it will act as a collector of this photomultiplier tube or PMT. Okay, it will collect all the electrons in order to provide the output voltage. अच्छा, 4 number part होची गोटे glass envelope which is evacuated. ए total पूरा system जो रहिला जोटा कि रोची तमरो photo cathode, then your diodes, all these diodes, then your anode or collector, याकू आमे गोटे evacuated glass envelope बा tube भितरे place करके रखिबा. Okay, which is specially designed having a structure like a cage. Okay, so it is having a large effective area in order to collect the photoelectrons on the first diode, and sometimes the cathode has a curved structure with annular rings for proper focusing of your photoelectrons. So this is all about the construction of photomultiplier tube. Now finally let us see the principle. So photomultiplier tube ର ଯଦି ଆମେ principle ଟା ଦେଖିବା ତାହେଲେ it is based on the phenomenon of secondary emission. Okay, so ଯେତେବେଳେ energetic electron collide କରୁଛି ଗୋଟେ material ସହିତ which is having low work function, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲା ଯେ it is causing emission of more electrons from the surface ଯାହାକୁ ଆମେ photoelectric effect କହିଥାଉ, and these electrons are actually called as the secondary electrons and the phenomenon is known as the secondary emission. Okay, so photomultiplier tube जो होची एटा होची गोटे special device which first of all picks up the light flash on the photocathode. ताबरे photoelectrons जोटा eject हेबो from the cathode, they are accelerated towards the पुणी सेही समान जिनस ही लिखा हिची first diode आड़कू accelerate हेबो, they are collected by the diode and thereby they are liberated more secondary electrons. Okay, further they are accelerated and focused on the electrode, that is the second diode D2. So प्रत्येक successive diodes रे acceleration होबो ए जो secondary electrons रो, because they are applied having potential in increasing order जोटा हमें ऊपर देखिला. So एही प्रकारे number of electrons which are emitted originally from the photocathode is multiplied many times. Okay, finally ताकू आमे पाइबा कोठी ना एनोड बा collector रे, which is the last diode, and it collects all the electrons and provide the necessary output voltage. So in brief यार principle हला जो photon जो गुड़ा रहुची which are transmitted to the photocathode of the photomultiplier tube or PMT. So a photoelectrons actually तार production हबो due to the absorption of these light photons. Okay, so a light photon को absorb करिकी photocathode कौन करिवो photoelectrons ର production करिवो. तापरे second part हला electron ର multiplication होची which is occurring very rapidly. Okay, so electron multiplication is rapidly produced at each diode and electrical pulse appears at the output of the multiplier. Okay, so this is all about your photomultiplier tube PMT. Okay. Thank you.